Good Telegram evening. even. The planet video is posted on the Super Accelerated Living group. I mean, it is about that why do 9 planets get shaken up Ma'am, and how we we are can not in that rectify group. if we have any planet which is going bad for us, which is not favoring us, say Ma'am, Saturn please or put that Jupiter. in Telegram even. Okay, okay. Acha, you're Because not we in are the not in. WhatsApp group? No, I asked matlab, then they said that now you add in, you should join Telegram group. Okay. ठीक है. We'll get Thank that. you. We'll post it maybe after the session. Yes, Thank you Soumya. so So, much. good evening, everyone. Formally welcome everyone right here and on the YouTube. So, we try and hold these question and answer sessions for individual guidances. Um, Keeping your anonymity intact, we definitely don't reveal. Even I don't know who's asked which question. I just answer them as and when asked to me. And two people who are here to whom the questions go, they know that we never talk about who's posted when. I mean, that's not really the concern. So you can just go ahead and no matter how personal the question seems to be to you, you can just go ahead and ask them. Ask them as in post it to any one of them, to Priya or Soumya. So yes, we'll start Soumya with you. Yes, ma'am. Uh, Yeah. Thank you, ma'am. Thank you for this opportunity to collect such interesting questions. I have around 15 of them, and Priyadi has couple. So between us, we will be asking you question one after the other. You can hear me, right? Am I audible? Yes. Yes, Okay, yes, ma'am. you are audible, Soumya. First question. Thank you. First question for the day. Can you give a suggestive practices a person can do at Amrit Vela, say for half an hour daily, and maximize its manifestation power, and also a simple night manifestation routine as well? Okay, I think we'll start with something so simple as that. So in the morning, I'll tell you what has worked for me. Okay, what works for me, so you can try and do that as well. So at the moment you wake up, first thing is like do your 10 blessings, which is count my blessings, and try and be different each day. Try not repeating your blessings that you have. As an example, I'm so happy and grateful to the beautiful curtains in my room that, keeps the room dark when required. Then I'm so happy and grateful to my beautiful balcony in the house where I can access outside and I can see the beautiful sunlight and enjoy the beautiful breeze of the nature. Then, like this. So, every day there has to be 10 blessings. You can say thank you for the purse that you carry, for the wallet that you have, for the suitcase that you use for your travel, as for the lipstick that you use, for the kajal that you use, for the face cream, the shampoos, the soaps, for practically anything at all. Try and be different each day. You will see that difference outwardly also in your life when you are trying to find out the blessings, every day if it is different. So once you've done the 10 blessings, of course, we know exactly how to do it. You need to reread that and say thank you 3 times after each one. After that, always go out in some open space if you have a veranda or a balcony or terrace or wherever, and say thank you to the sun, moon, and the 9 planets. Okay, out loud. Talk to them. So all the, and Rahu and Ketu, which are the nodes of the moon. So say thank you and say that thank you for aligning with my beautiful life and always being there with me as a very powerful force. And after that, say thank you to the 5 elements, because in the morning session I'd mentioned that the 5 elements are God itself. So say thank you to that, and then come back inside to wherever you were sitting and writing your count my blessings. And then you can do certain affirmations which are very important, affirmations which are important to you. So there are some common affirmations that we all do. Try and write them a minimum, since you asked that in that 30 minutes what can I do. So I'm not telling you to write them 5 times and 10 times. Just write them three times every affirmation, and they are just one liners, like happiness is my habit now, life is beautiful, easy, and effortless, my vocation is my vacation, I love my life,
like these: thank you for my perfect health. So these are the few affirmations, and thank you for the beautiful family and so much love in the family. So these kind of affirmations, write them just three times, and I think that would complete your 30 minutes. And in the night before going to bed, it is the magic rock practice, which is the last thing that we do. Hold the rock in your hand and dig out small benefits that you can find out from the day, like little modes that you may have ignored. Even if the sugar was right in your cup of tea, say thank you to that. If your food was adequately warm, say thank you for that. If someone else cooked the food, think and really say thank you for that. So throughout the day, say thank you for everything that happened during the course of the day. And just before bed, put back your magic rock, that is your stone, put back to where you had pulled it out from. एंड देन उसके बाद में एंड में कोई सीड डाल दो अपने सबकॉन्शियस माइंड में ब्रू करने के लिए, बिकॉज रात में सबकॉन्शियस माइंड बहुत मल्टीप्लाई करेगा जो भी आप सीड डालो. सो विजुअल्स के फॉर्म में डाल सकते हो या वर्ड्स के फॉर्म में डाल सकते हो. वर्ड्स के फॉर्म में अगर आपको डालना है, यू कैन जस्ट पुट इन एज प्रोस्पेरिटी एंड वेल्थ, है ना. These are very powerful words. Or you can put it in the form of a visual. That is, if you're looking for a beautiful partner of your choice, your dream partner, you can just put that visual that both of you are walking on the beach hand in hand, maybe giving a kiss to each other, something like that. And if you are, well, depends, like successful, if you want to, take your business to the next level, देन आप अपने बिजनेस की सक्सेस को जो अपने कोवर्कर्स हैं और फैमिली के साथ केक काटते हुए विजुलाइज करो, दैट यू कटिंग द केक, or you're cutting the cake because you're celebrating the success of your business because it has reached that milestone जो आपने target set किया था, say 25 lakhs, 50 lakhs, 1 crore, 2 crores, 5 crores, 10 crores, 100 crores, whatever it is. So उसकी visuals में आप celebrate कर रहे हो, cutting the cake and celebrating that with everyone in your office, maybe your close friends, your family, and then all of them are congratulating you on this achievement. So with something like this, go to bed. Okay, so that this particular image that you really want to see happen in your life, that multiplies, and kind of you can see that happening when you're gone back to sleep. So yeah, this is what you can do as the morning and evening practice. Yeah. Okay, ma'am. Thank you. Next question is they have a kid that is 2 year old. They have a kid who is 2 year old. He is bit of a special child. And even the mother has pulled herself out of some depression, postpartum depression. She is doing magical wand, magical health, and all those practices ongoing. She is asking, is there anything specific that she needs to do for her child or to herself more additionally? Oh, firstly, you need to work on yourself. You need to really pull yourself out because ये जितने भी स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं ना, ये बहुत स्पेशल मिशन के साथ बॉर्न होते हैं. ठीक है, तो अपने बच्चे के साथ बिल्कुल टेंशन वाला, मतलब डोंट कीप दैट एटमॉस्फेयर बिकॉज द चाइल्ड एंड द मदर, दे हैव अ लाइफ टू लाइफ बॉन्ड. Okay, so any stress or tension going on in the mother's mind is definitely going to get transpired to the child also. So, and the recovery is going to be very tough. So, you just don't need to worry. There are so many children, like who have been special children. They have done, I mean, they've achieved great strides in their life. So, you don't know what their mission is. There's definitely a very big mission. So, just pray to God every day that my very beautiful child, my son or my daughter, that achieves the real purpose in their life and kind of really rises, shines, and accelerates in whatever it is, the chosen field that God has chosen for them. So just keep the vibe very good in the house. There's nothing to worry, nothing to get, and no need to get depressed for such a thing, like just don't, because these children are going to prove one day. I mean, recently I was there at a fashion show as a spectator, as a guest invitee, and I saw these Olympics. There were so many of them, the Olympic gold medalists. So there's something called Para Olympics or something that is held for these
special people, and they had kind of, I was so like amazed to see their victories and celebrations, and like, so they are not less than anyone else. So just shift your energy and you will see the situation in your environment changing in the best possible way. Okay, so this is what, so you need to change your energy and write 5 blessings for your child every day. So what you can do is keep your child's picture in front of you on the mobile, or two of you together, and just write 5 points for the kid. That I'm so happy and grateful that my child is so amazing and he's always so happy. I'm so happy and grateful, or I'm so grateful to my child because he's given me the joy of being a mother. I'm so grateful to the child because he's so good at, whatever he might be good at, that he's disciplined, he sleeps so well in the night. That way, I'm so happy and grateful that my child looks so pretty, like, or whatever it is. Just write nice things about your kid, and that energy will transform situations in the best possible way. And as a human, we can't even imagine how that situation is going to change. Okay, or what will happen after that. But yeah, it will definitely give way to the most beautiful outcome. That I can assure you. Yeah. Okay, ma'am. Uh, I have got this question multiple times from multiple people. This is regarding housewives who want to become financially independent. They are joining, they want to earn money, they want to join the workforce after many, they have that doubt or they lack that confidence whether they can do it or not. So what practices, what affirmations will work for them? These are for housewives. Things. Yeah, two things. Firstly, put it in your dream list. I feel every girl, every female after the age of 19, when the teens are over, has to be financially independent, irrespective of how much the husband makes, or father makes, or brother makes, or grandparents make. Okay, it's very, or whatever you may have inherited, it really doesn't matter. Every female after the age of 19 should be financially independent. That's first thing, very important. So in our practices, if you really want to be financially independent, please put it in your dream list. Okay, there are multiple people I've seen, multiple homemakers where they put it in the dream list, and like strange things happen, and what kind of invitations they have into joining a business. Someone gets a job, someone just they're there at a kitty party or with a neighbor, and someone offers them some lucrative career, and it just takes off. So as of now, if you're not able to understand, we need to put it in the dream list. Okay, that's very, very important. And in the same language, thank you, thank you, thank you that I am now financially independent, doing the things that I love. Okay, that's number one. And the second one is that you need to do a lot of mirror work. Confidence will always come with mirror work. So that's very, very important. Sit in front of the mirror, give at least 10 minutes to yourself sitting in front of the mirror, and talk to the mirror and say that, suppose Ritu is my name. Okay, so I'll say, or say, I'll resonate more with Deepti only. So if I sit in front of the mirror, I'll say, hi Deepti, thank you so much for being you. I know that you're so confident of yourself. Like, you have done so much in your life ever since you were born. You were such a nice kid, and then you grew up and you did your university course, you did your graduation in whatever subject that you may have done, that you've done your graduation. उसके बाद आपने आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हुए, और इतना आपने सुंदर तरीके से अपना घर संभाला हुआ है, और इतना अच्छा आप खाना बनाते हो। स्पेशली आप जो छोले बनाते हो वो बहुत टेस्टी होते हैं। और जिस तरह आपने पूरे घर को जोड़ रखा है, अपने इन लॉज की आप परवाह करते हो, आप उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हो। किसी का भी बर्थडे होता है फैमिली में, तो आप सबसे पहले उनको विश करते हो। पता नहीं आपको इस सब के बर्थडे कैसे याद रह जाते हैं, और आप अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का इतने अच्छे से ख्याल रखते हो। सो दैट इज कुडोज टू यू, यू रियली आर अ सुपर अचीवर एंड अ सुपर वुमेन। और जिस तरह से आपने अपने आप को अभी तक संभाल के रखा हुआ है, आप अपनी केयर करते हो, और घर का सारा काम संभालने के अलावा आप बाहर से शॉपिंग करते हो, ग्रोसरीज करते हो। पता नहीं आप में इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है। यू आर रियली ब्रिलियंट। और अब आप जॉब भी करते हो। अब आप जॉब भी करते हो और आपका इतना अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है। इस तरह करके आपको 10 मिनट अपनी तारीफ करनी पड़ेगी, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
ठीक है। और रात को सोने के पहले जो मैजिक रॉक प्रैक्टिस करने के बाद द लास्ट थिंग इज दैट just imagine that you're standing in front of 500 people and giving a lecture or whatever, a talk, and just imagine, like hear the sound of people clapping when you speak, and that will become a true reality. So this is how it is, and just putting it in your dream list itself is very important. And अगर आप पहले से practices ये करते आ रहे हो, तो जो मैं करती हूँ, मेरी dream list मेरे phone में होती है, ठीक है, और उसमें रोज मैं पढ़ती हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं होता, लाइक बिफोर योर वेरी आईज वाला जो है चैप्टर नंबर 22 इन द मैजिक बुक, मैं रोज करती हूँ। मतलब कोई दिन ऐसा नहीं होता, चाहे मैं कितनी भी व्यस्त हूँ, कि मैं अपनी ड्रीम्स नहीं पढूं। इनफैक्ट आज मैं जब सुनीता के साथ वॉक कर रही थी, तो आई जस्ट टोल्ड हर दैट आई सेड दैट आई वांट टू टेल समवन अबाउट माय ड्रीम्स, बिकॉज मुझे वो सीक्वेंस भी याद हो गया। इतनी बार रोज पढ़ती हूँ, दिन में 2 से 3 बार। सो वो सीक्वेंस भी याद है कि नंबर 1 ये है, नंबर 2 है, नंबर 3। और मैं उसको इतने फ्लेयर के साथ बताती जा रही थी कि मेरी पहली ड्रीम इज दिस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दैट लाइक व्हाटएवर। फिर मैंने नंबर 2, तो कहती है तेरी 10 हुई नहीं अभी तक। मैंने कहा नहीं, हो गई है, ये 10th है मेरी, ये वाली। सो शी थॉट देयर वर सो मेनी ड्रीम्स बिकॉज आई वाज रियली elaborating it, and in a very enthusiastic, excited way, kind of narrating that. So that the same way I narrated to myself also. And when I went to Pondicherry, so I narrated it to the sea also, because I know that water is going to absorb every vibe of what I'm resonating here, with my dreams. And then that is how it is. So think about it, talk about it, write it, do your scripting. सी स्क्रिप्टिंग जब आप करते हो, तो उसमें आपको ये लिखना होगा, डियर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच दैट मैं अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ और मैं इतना अच्छा कमा रही हूँ, जबकि मैं सिर्फ 4 घंटे काम करती हूँ। सपोज अगर आपका जो भी है, ठीक है, देर आर हाउसवाइफ्स हु वांट टू वर्क ओनली फॉर 4 आवर्स, क्योंकि अभी तक वो घर से निकली नहीं है, तो उनको लगता है कि पूरा दिन अगर वो घर से निकल जाएंगी तो लाइक कैसे काम चलेगा, बच्चे छोटे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या फिर अगर आपको 6 घंटे काम करना है, या आपको 8 घंटे काम करना है, जितनी देर भी आपको करना है, आप उसमें लिखो दैट डियर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच दैट आई फाइनली स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, और इतनी अमेजिंग ड्रीम जॉब मुझे मिली है, इतना मजा आ रहा है। मतलब लिटरली माय वोकेशन इज माय वेकेशन। वोकेशन का मतलब होता है वो प्लेस ऑफ वर्क जहां से आपको पैसे आते हैं, वो वोकेशन है, ठीक है। तो लिटरली अगर आपको वोकेशन आपको वेकेशन हो जाए, वेकेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे आप बिल्कुल चिल्ड आउट रहते हो, आपका दिमाग में क्लटर वेकेट हो जाता है। वेकेट करने को वेकेशन बोलते हैं। तो वो उस तरह की अगर किसी के पास जॉब है, दैट आर यू एंजॉय इट मोर देन यू एनीवेयर एल्स, लाइक घर से ज्यादा आप अपने वर्क को एंजॉय करते हो, इतनी ग्रोथ आपकी हो रही है, इतने अच्छे कोलीग्स आपको मिले हुए हैं, इतना मजा आता है, सब इकट्ठे मिलके खाना खाते हैं, इतना प्रोडक्टिव काम है, सब हेल्पफुल है, सब कुछ तो है, ठीक है। इस तरह से अगर आप यूनिवर्स को लेटर लिखोगे, स्क्रिप्टिंग बोलते हैं इसको, है ना। सो डियर यूनिवर्स, दिस इज आई एम रियली एंजॉयिंग माय जॉब, बहुत मजा आता है, आई एम गेटिंग सो मच मनी, I've become, so financially free now that I've purchased this, which I always wanted to, but मुझे पहले ऐसा लगता था कि मैं, अपने पेरेंट्स से, हस्बैंड से, या जिनसे भी पैसे लेके कर रही हूँ, अब मुझे सोचना नहीं पड़ता। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। Okay, so this is how you have to write a letter to the universe as if it's already done that way. So this way you will, when you think about it, talk about it in a good way. अगर आपको stress आ रहा है, या आपको ये लग रहा है कि कैसे होगा, मैं तो इतनी qualified नहीं हूँ, qualification से कभी किसी के, आप जितने भी big wigs देखोगे ना, वो सब उन्होंने यूनिवर्सिटी के डिग्रीज नहीं लिए हुए हैं। जितने भी बिलियनर्स है ना, उनमें से 50% ने यूनिवर्सिटी की कोई डिग्रीज नहीं ली हुई है, जैसे तैसे ग्रेजुएशन क्रॉस किया होगा बस। So it is nothing, your qualification has nothing to do with your how much money you're making, etc. So just enjoy your life, and 100% I can give you in writing, you're going to get, financially free very, very soon. It's the easiest thing to do. Okay, अब किस तरह से होगा, कुछ चीजें यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं, है ना। बट या आपके ड्रीम में ये लिखा होगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दैट आई एम नाउ फाइनेंशियली फ्री doing what I love. Okay, so that you don't get anything that you don't enjoy that way. हाँ जी, सौम्या है। Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. Yes. yeah. Next question. Um, this is a interesting one. It's regarding that magic check wala thing. There are two questions for the same. One is, the question is,
if you already have money for everything, तो check लिखना जरूरी है क्या? And then the second question is, you mentioned in the classes, right, ma'am, that in the check you take the normal check, you scratch out the name, and then you write your own, and then the question is, when you scratch out, is that still a vibe? Like, will that check still work? Is a question from someone else. So if you already have money for everything, you don't need to. I mean, like you can maybe just ask money for someone else that you take and you give that money to an NGO, to an old age home, or you can fund any child's education. You can do all of that. Or you can maybe, like take that money and give it to your domestic helpers as a special bonus. It's not always for us. Okay, so you can do that. And if you feel that you have too much money already, then you don't need to. You don't have to fill the magic check. Okay. So if you really don't, because it has to come from the heart, only then there will be gratitude. Because the whole idea of writing the magic check is to create that kind of a gratitude so that that check gets realized. Because अगर आपके पास already बहुत पैसा है तो आपको वो fire in the belly नहीं होगा ना to be able to do that gratitude. So it's absolutely all right. But then if you have so much money, I would advise you to please start thinking about many others underprivileged people and try and feed them on a daily basis. If you have that kind of a money that you can feed them on a daily basis, there are rickshawalas standing at different metro stations on the road, or like each time when you're paying the money, say to a cab or to anyone, like you see anyone on the road who's underprivileged, try buy them, buy some food and give it to them. Or you can adopt certain girls from cry or wherever, like, and fund their education, etc. So please use your money there. So you don't need to fill in the magic check. The whole idea is to fulfill your dreams. So I'm sure that your dreams are already fulfilled क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है already. लेकिन अगर बहुत सारा पैसा है तो उसको वहां देना शुरू करो जहां पे कम है, ऑस्मोटिक प्रेशर की तरह. ठीक है, तो उससे आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां आएंगी एंड सबकी हेल्थ अच्छी रहेगी फैमिली में, क्योंकि वो कर्मा वापस लौट के आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा दुआएं मिलेंगी इस पर्टिकुलर एक्ट से. सो दैट्स ओके. और दूसरा क्वेश्चन था मैजिक चेक वाला कि नीचे वो स्क्रैच करके, हाँ स्क्रैच करके, जैसे मेरे नाम के नीचे हमेशा वहाँ दीप्ति वर्मा लिखा होता है चेक बुक पे, सो मैं उसको हटा के द यूनिवर्स लिखती हूँ. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू एंड ऑफ कोर्स इट वर्क्स. दैट्स हाउ इट वर्क्स. मेरे तो सारे चेक रियलाइज हुए अभी तक इसी तरीके से. आपका भी हो जाएगा और बहुत जल्दी होगा. या Okay, ma'am. Next is, some people use fake receipts, etc., to save tax, and they advise the same to others. Sometimes the CA also say the same as. So, how to handle them? let the CA do whatever he wants to do. ठीक है, every penny saved is penny earned. So अगर CA जो अपना काम कर रहे हैं तो वो झूठ नहीं बोलेंगे. वो यही कहते हैं कि आपने जो पेट्रोल के बिल्स दिए हैं, बिकॉज मेरा CA भी मुझे ऐसे ही बोलते हैं कि जो आपके पेट्रोल के बिल्स है, अभी तक तो मैं पेट्रोल के बिल्स कभी रखती नहीं थी. वी जस्ट गेट द पेट्रोल फिल्ड इन आवर व्हीकल्स एंड दैट्स इट. वी नेवर टेक द रिसीप्ट एंड ऑल. बट देन ही मेक्स हिज ओन रिसीप्ट एंड ऑल दैट. दैट्स ओके. आई हैव स्पेंड दैट मनी, नो. So if he makes my laundry bills and gives it, I do pay for the laundry. It's just that there are no bills for it. So whatever he puts, I mean, I've already spent that much. So it's absolutely okay. Please let the CA, don't get into those nitty-gritties as to how the universe is saving your money. So it is absolutely okay. Just enjoy that process, and like whatever penny saved is penny earned for you. It's okay. जो आप डिजर्व करते हो, जो आपका पैसा है, वो आपके पास जरूर वापस आएगा. अगर आपकी किस्मत में वो पैसा ही नहीं है तो वो सीए कितना भी बचा लेंगे तो वो आके भी आपके पास नहीं आएगा, या वो आने के पहले ही आपका खर्चा खड़ा हो जाएगा कोई ना कोई ऐसा. ठीक है, सो इसीलिए जस्ट से थैंक यू टू द मनी एंड दैट्स अबाउट इट. या Okay, ma'am. How to stop procrastination? How to stop procrastination? How to not Try and do this affirmation. I had mentioned once in the session also that thank you, universe, that I complete all my work before time. So you have to keep writing it. Please write it 21 times. And you'll have to take it beyond 21 days. Slowly, slowly, your habit of procrastination, because you'll have to let your subconscious believe that you complete all your tasks before time. It is all coming from
somewhere, maybe past thoughts, programming of the subconscious mind, because of whatever reasons, maybe because you were with people who were procrastinating too much. So for people who don't understand much English, procrastination का मतलब होता है आज का काम कल करना, कल का काम परसों करना, परसों का काम कभी नहीं करना। इसको प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। जैसे मुझे उस किसी पर्टिकुलर पर्सन को, सपोज मुझे कुछ खरीदना है मार्केट से और बहुत जरूरी है वो खरीदना, ठीक है, सपोज आपको क्विल्ट खरीदना है मार्केट से। अब आप बोल रहे हो नहीं नहीं मैं ना कमिंग संडे चली जाऊंगी। अब कमिंग संडे आ गया, फिर आज का दिन चला गया, फिर बोलते हो मैं ना एक दिन ऑफिस से वापस आते वक्त चली जाऊंगी वेंसडे थर्सडे को, बिना बात के, ठीक है, बिना रीजन के आप प्रोक्रेस्टिनेट करते जा रहे हो कि मैं कल करूंगी, मैं कल करूंगी, मैं कल करूंगी। इसको प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं और ये आदत होती है। तो इसके लिए एफर्मेशन होती है ये, दैट थैंक यू यूनिवर्स दैट आई कंप्लीट ऑल माय टास्क बिफोर टाइम, दैट वे। सो ये करते रहिए आप 21 बार रोज, अपने आप सबकॉन्शियस माइंड को आप ये आदत डाल दोगे और न्यू प्रोग्रामिंग स्टैब्लिश कर लोगे कि मेरा सारा काम समय के पहले हो जाता है। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू कीप टेलिंग, राइटिंग इट, ओके, दैट वे, या। Okay, ma'am. Next question. If someone is totally positive and manifesting amazing, harmonious, loved relationship with the other person, but the other person is giving negative energy to it, so how to handle that? Because as you had earlier told that our frequencies are destroyed by other persons, so keep thinking it. So how to handle this is So the there's question. nothing wrong with the other person. Everything is wrong with us only. Okay, it doesn't happen. जैसे अगर कोई और किसी तरह से बिहेव कर रहा है, somewhere somehow आपके सबकॉन्शियस ने उसको अट्रैक्ट किया है, ठीक है, वो एनर्जी आपको चेंज करनी पड़ेगी। सो द फर्स्ट थिंग इज टुमारोज प्रैक्टिस, कल का सेशन आप बहुत अच्छे से देखना, समझना उसको, जो मैजिक बुक का चैप्टर नंबर 3 है, विच इज मैजिकल रिलेशनशिप्स। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे चेंज किए अपनी जिंदगी में, कोवर्कर्स के साथ, बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ में। सो दैट यू नीड टू डू एवरी डे जब तक वो रिलेशनशिप में एनर्जी पूरी ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाती। एंड सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज दैट टेक योर एंड द अदर पर्सन's पिक्चर, टू ऑफ यू टुगेदर, okay, together picture, and do Ho'oponopono for about 10 minutes. So you will see that energy shift, but do it for 45 days at a stretch. That will take care of it. It's a small thing. It's not very big. Yeah. Yeah. Priyadi, would you like to ask yours? I'll ask after some time again. Sure. So, ma'am, there's a court case which is going on. So the person has asked that what techniques she needs to practice I didn't get for your the for question, resolving Priya. the court case, ma'am. There's a court case. There's a court case which is going on in life of a person. Okay, and now what technique she has to do in order to come out of that. Also, firstly, put it in your wish list Am I and do audible? chapter number 13, 20, and 22 every day. It is as simple as that. Okay. For the perfect resolution, right? Thank you, thank you, thank you. That so and so court case between me and that person was resolved amicably. Okay, and with a beautiful outcome. This is what आपको लिखने की जरूरत है अपनी ड्रीम लिस्ट में। और चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 20 और चैप्टर नंबर 22 आप रोज कीजिए। इट्स नॉट आस्किंग फॉर टू मच, मतलब वो उनमें से कुछ भी लिख के करने वाला नहीं है, आप वो कीजिए। और उसके अलावा आप को सेवेंथ चैप्टर नंबर 7 जो है, जिसमें आपको पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढने हैं उस सिचुएशन के बारे में कि उससे आपको क्या सीखने को मिला, ठीक है, जो नेगेटिविटी इनटू ब्लेसिंग्स वाला चैप्टर है, वो आपको करने की जरूरत है। 10 चीज ढूंढिए उस सिचुएशन में से और फिर उसके एंड में लिखिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपकी एनर्जी उस पर्टिकुलर पर्सन से खराब रही तो आप कोर्ट केस नहीं विन कर पाओगे। और अगर आपके मन में दुश्मनी है उस पर्सन से, एंग्स्ट है या डिसरिस्पेक्ट है जरा भी, तो फिर वो सिचुएशन और खराब होती जाएगी।
ठीक है, तो इसके लिए जो टेलीसाइकिक वाला जो चैप्टर है जो हम पिछले 2-3 दिनों से कर रहे हैं, उसमें भी आप ये आराम से जस्ट डीप ब्रीथ, अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करो, डीप ब्रीदिंग से वो हो जाता है ना। कॉन्शियस माइंड थोड़ा शट डाउन मोड पे चला जाएगा। आंख बंद करके आप सोचो कि वो जिसके जिसके साथ कोर्ट केस चल रहा है, जो भी आपकी ऑपोजिट पार्टी है, आप उस पर्सन के रिप्रेजेंटेटिव को सोचो कि वो आपके सामने बैठा हुआ है और उससे आप अपनी दिल की बात करो। ठीक है, उससे आपकी नेगेटिव एनर्जी भी बहुत क्लियर होगी और बताओ कि लेट्स एमिकेबली रिजॉल्व दिस। कोई फायदा नहीं है, आपको भी परेशानी हो रही है, बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, हमको भी परेशानी हो रही है, तो हम इसका परफेक्ट रेजोल्यूशन ढूंढ के लेट्स जस्ट क्लियर दिस केस, and you will see that, then wait for the universe or subconscious mind to do it. So this is what you can do. ठीक है, एनर्जी अपनी चेंज करो विद द कोर्ट केस, इट विल रिजॉल्व ऑन इट्स ओन। That's a company case, ma'am. That's a company case. Yeah, even if Companies it का is a case होता company है ना? case, whatever, someone has given a case on this person's company, no, like that, no. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, so NCLT. you'll have to bless that person with wisdom, wisdom and happiness. Okay, so on its own, it is going to get resolved. Yes, ma'am. Should I ask the next question, ma'am? Yeah. Yeah. So there's a girl, according to that, this particular question relates to the telepsychics book, ma'am. Telepsychics mean we have studied now that we are talking to the one who are not in life, like not alive anymore. So this girl talks to her father and he responds to her also. And she wants to know that she does it very, amicably and everything gets resolved. But now she thinks that ऐसा करने से कहीं उनके फादर की जो कोई प्रेजेंट लाइफ होगी, क्या मैं उसको परेशान तो नहीं कर रही हूँ? Is it okay to talk to my father like this, as he might have taken transition, or I don't know, like she just asked that. Okay. Okay, no, you Yes, don't need ma'am. to worry about it because कोई हमारे भी स्पिरिट से बात कर रहा होगा। जैसे अगर आप चाहो तो आप मेरे भी स्पिरिट से बात करके मेरे मेरे आंसर्स आप बिना मुझसे पूछे निकाल सकते हो। लाइक आप अपने टेलीसाइकिक माइंड को ये बोलते हो मैं तो अभी जिंदा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा जवाब आपके कान में चला जाएगा। सो बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट सब लोग स्पिरिट्स हैं सबलिमली एट द फंडामेंटल लेवल। हम सब स्पिरिट है, चाहे हम जिंदा हो या हमने ट्रांजिशन ले लिया हो, इट रियली डजेंट मैटर, है ना। हमने देखा था डॉक्टर क्विम्बी बेलफास्ट में बैठे हुए थे और उनकी जो पेशेंट थी वो दूसरे एक कंट्री में थी, तो वो बेलफास्ट में बैठे बैठे उन्होंने इटली में उनसे पूछ लिया और बात कर ली और उनको जवाब भी मिल गया। दोनों जिंदा थे, पेशेंट इटली में जिंदा थी, डॉक्टर क्विम्बी बेलफास्ट में बैठे हुए जिंदा थे, वो उनके ट्रीटिंग डॉक्टर थे, मतलब स्पिरिचुअल हीलर थे। तो उस लड़की ने इटली में बैठे बैठे बेलफास्ट में जो डॉक्टर क्विम्बी से बात की ना, दोनों जिंदा थे। सो इट रियली डजेंट मैटर कि ट्रांजिशन ले लिया हो या अलाइव होते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अभी भी स्पिरिट आके गाइड्स अस। सो अब्राहम हिक्स जो है, अब्राहम हिक्स तो अब पहले एस्टर और जेरी हिक्स इकट्ठे काम करते थे, दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तो एस्टर हिक्स के अंदर स्पिरिट्स आते थे ना, एंजल्स आते थे और वो उनके थ्रू चैनल करते थे। तो अब जितनी भी अब्राहम हिक्स की किताबें लिखी हुई है, इट्स नॉट एस्टर हिक्स हुज रिटन इट, एस्टर के अंदर स्पिरिट जो आते हैं वो उनसे वो किताब लिखवाते हैं। मतलब शी दे आर यूजिंग एस्टर हिक्स लाइफ एंड बॉडी टू चैनल देयर एनर्जीज सो दैट दिस वर्ल्ड कैन बिकम अ बेटर प्लेस टू लिव इन, है ना। तो उसके बाद थोड़े टाइम पहले अभी जेरी हिक्स की डेथ हो गई, लाइक ही ऑल्सो टुक अ ट्रांजिशन। तो अब जेरी भी आते हैं ब्रायम हिक्स बन के एस्टर हिक्स की बॉडी में और उनके थ्रू, क्योंकि वो स्पिरिट बन गए, सो दे नो ऑल एंड सी ऑल, दे नो एवरीथिंग। सो अब वो अपनी वाइफ के बॉडी के थ्रू चैनल करते हैं टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। सो और वो जेरी से खूब बातें करती है। और एस्टर हिक्स का मैं इंटरव्यू पढ़ रही थी तो उन्होंने पूछा था कि मुझे कभी कभी वो जेरी को अपने हस्बैंड को बहुत मिस करती हैं, तो उन्होंने पूछा था कि जेरी जस्ट मेक मी रियलाइज दैट यू आर देयर ऑल अराउंड मी प्रोटेक्टिंग मी। तो उनको जैसे लाइट्स होते हैं ना, जैसे जुगनू होते हैं फायरफ्लाइज, उनको अपने डार्क रूम में लेटते वक्त वो जुगनू जुगनू जैसे नजर आने लग गए, like those fireflies. So then she knew, she was just smiling that Jerry's coming in this form and just making his presence felt to me like that.
और जेरी हिक्स ने तो ऑब्वियसली ट्रांजिशन ले ही लिया होगा ना अभी तक, बिकॉज इतने साल हो गए। लेकिन आज भी आप एस्टर हिक्स का कल का भी अपलोडेड वीडियो देखोगे अगर, अब्राहम हिक्स का, तो उसमें भी वो जेरी हिक्स अभी भी तो उनके थ्रू चैनल कर रहे हैं ना लोगों के लिए। सो ऐसा कुछ नहीं होता। आप जैसे हम एक दूसरे से भी बात कर सकते हैं, लाइक स्पिरिट स्पिरिट लेवल पे। मेरा सबकॉन्शियस आपके सबकॉन्शियस से कनेक्ट करके बात करेगा, चाहे मैं जिंदा हूं या नहीं हूं। इट इज सबकॉन्शियस टू सबकॉन्शियस, इट वर्क्स लाइक दैट। सो गो अहेड एंड यू कैन टॉक टू योर फादर। उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही, वो अभी भी अपनी जगह बहुत हैप्पीली, और बल्कि उनको बहुत खुशी होगी कि वो आपके काम आ पा रहे हैं और आपकी जिंदगी में डिफरेंस मेक कर रहे हैं दैट वे। हाँ जी। Thank you, ma'am. So the next question is, there is someone like a lady who is worried that her son of 40 years of age doesn't even gives a thought to get married. When asked, he just doesn't give any ear to it. Financially, he's doing very good. He's good with his friends also and with the friends on the family of the friends, but he himself doesn't want to get married. So any affirmation that he knows the essence of getting married and gives a positive response to her and the family. Yeah, I this mean, is the like, question, she ma'am. wants to get married to him. No, 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 ma'am. Her son wants to like her Your son voice is is not breaking like so ready to much. get Is married. our network? Your voice is breaking so much, Priya. She's saying there's a mother whose son isn't getting married, or whose son isn't interested to be married, and he's 40. The son is 40. So it's a mother's concern that whether he should get married or he should know the essence of marriage or not. Since you give blessings to people, so they're asking you. Acha. Like Dishant, like Dishant. Yes, ma'am. No, 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 I ma'am. mean, like, it is totally a free will. If the person doesn't want to get married, दुनिया की कोई ताकत उसको ये नहीं कह सकती है कि वो शादी करे। नो, हमको फ्री विल की बहुत इज्जत करनी होती है, स्पेशली इन दीज प्रैक्टिसेस। लाइक किसी की भी, like, I was just telling as an example, like I was telling Sunita, she was slightly worried. So I was, like about the children and all that. So just telling that, Sunita, don't worry. I will write for your son, so you don't need to worry. अब सन के करियर के बारे में मुझे लिखना था। अब आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ करियर ही इज इंटरेस्टेड इन। सो व्हाट आई एम जस्ट राइटिंग इज दैट जो भी उनके बेटे का नाम है, तो वी कॉल हिम सनी एज अ निकनेम। सो व्हाट आई एम राइटिंग इज दैट उसकी फ्री विल को 100% रिस्पेक्ट देते हुए, सो आई एम राइटिंग इज that thank you universe that Sunny is thriving and flourishing in his business, doing all that he loves, because I really don't know what he loves. Maybe it is an interior work, or maybe it is her family business, or maybe it is something else that's going on in his mind. So I cannot write that. So I'm very, very particular, although I know what their family business is. you know I mean, the parents might want that the child comes in the family business. The parents might want that, as a person who's inheriting the whole empire of the business and stuff like that. But I'm not very sure that he really wants to be part of the family business. In fact, I doubt that. Okay, so this is the reason I'm writing this, that thank you, universe, that Sunny is thriving and flourishing in whatever work that he loves, and he's enjoying his work. So he's minting money also, and he's doing something that he loves, because I don't know how much money is his target, and I don't know that what is that work that he loves. Maybe he wants to do a job, or a business, or a particular kind of business. So, because just respecting the free will, when we do anything against someone's free will, it is a negative karma and it comes back on us. Always remember it. Someone doesn't want to get married and they're very, very happy in their space. Please let them be. Okay, there is always a right time. If your son really wants to get married, he will. There might be something going on in his life. Maybe he liked someone and that person has got married to someone else. He's not in that mental state to go and, start living a life with someone else. It could be anything. Okay, just pray for his happiness, growth, and well-being. That's about it. When he becomes happiness and there is growth and well-being for him, you will see that the person might want to once again, like restart a life afresh, because we really don't know what is the reason. So yeah, I would just bless your son with a lot of happiness, that he enjoys every day of his life, so much so that he celebrates his every day. That is what I can bless him for.
Yeah. Yes, Priya. Yes, ma'am. The next question is, thank you for that answer, ma'am. The next question is, so many time I go down and do overthink about anything at that, like she overthinks a lot and she goes down. So what can she do about it? The moment you overthink, you have to start chanting, "Thank you, universe, for everything that I have. Thank you for the sun and moon. Thank you so much for all these things that I have. I've got a home to live. I have this." You have to first learn to divert your mind from that particular situation that is bringing you down. Okay. And eventually you will develop a mental muscle and you'll be able to do it very, very easily. We all have come from there. A person like me, overthinker, I've always been an overthinker all my life. कोई भी छोटी सी चीज होती थी ना, मैं ओवर इमेजिन करने लग जाती थी, फ्यूचर के लिए भी, पास्ट के लिए भी. It was always like that. But we do. I have also developed like that. So all of us are growing and evolving. Just take that one small step at a time, and take that. So the moment something comes in your head which makes you realize that this is not who you are, this is not what you want to see in your life, आप immediately सिर्फ thank you, thank you, thank you ये chant करने लग जाओ. अगर आपने 90 seconds के लिए भी ये कर लिया, आपका momentum change होना शुरू हो जाएगा. और फिर दोबारा से फिर दिमाग इधर उधर जा रहा है, तो आप लिखना शुरू कर दो. अगर बोल के हो पा रहा है, मतलब सिचुएशनल होता है ना. देयर आर टाइम्स व्हेन वी आर एबल टू राइट, देयर आर टाइम्स व्हेन वी आर नॉट एबल टू राइट. So when you are in a condition that you can write, please start writing. "Thank you, universe. Thank you, universe. Thank you, universe. Thank you, universe." Just keep writing it, especially जब दिमाग बहुत ज़्यादा इधर उधर जा रहा है. Or you can keep chanting it, or do your magic footsteps. So these are the techniques that you can adopt initially. Slowly, slowly, this becomes a habit. And please start writing, "Happiness is my habit now." Write it 21 times. Okay. And constantly keep writing it for 3 months. Yeah. So the next question is, thank you for that, ma'am. Next question is, uh, the person has lost her first magic rock, वो उनका गुम हो गया है, and now she has got the second one. तो second one को वो कर तो रही है charge, मतलब she is doing the practice, but she says that उसमें cracks आ रहे हैं. So what to, like, how she goes about it? उसमें जब cracks तक आ रहे हैं, तो टूटता she नहीं है तब thinks. तक उसको कोई बात नहीं. जब तक टूटता नहीं है तब तक उसी को करो. ये मेरा भी थर्ड मैजिक रॉक है, ever since I started practicing in 21 April. So 2020 April rather. 2020 April से अभी तक मेरे 3 स्टोन खो चुके हैं. ठीक है. So it's absolutely okay. This is a reminder to be grateful. That's about it. Okay. So अगर cracks आ रहे हैं, इसका मतलब है उसमें खूब एनर्जी जा रही है. ठीक है. अच्छी एनर्जी है. जब तक टूटता नहीं है तब तक आप वो यूज करो. एंड इट रियली डजंट मैटर, जब टूट जाएगा तो हम नया ले लेना. Thank you, ma'am. The next question is, what affirmation should I do to pay off a loan to the bank, and how many times? तो फर्स्टली यू हैव टू बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. अगर आपको ये करना है, पहले तो आप अपनी इसको ड्रीम लिस्ट में डाल दो. तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दैट आई हैव पेड ऑफ द मनी दैट आई हैड यूज्ड टू परचेज माय हाउस. डोंट इवन कॉल इट अ लोन. Okay. So it is just a money that, bank had given to you to, kind of buy whatever, your home loan or car loan or whatever. It's a home loan. Uh, she hasn't specified that, ma'am. Achita has mentioned. Okay. So whatever, firstly, and then write blessings every day, at least 5 of them. Okay. For whatever you're using. If it is a car, then you have to write it for that. Thank you, universe, that, my car gives me freedom to move. Thank you so much that, I have done a trip to Shimla, Manali, wherever you've gone in your car. So whatever, and you can also be very, very thankful and grateful to the bank which has trusted you so much to have given you the loan before you even paid for it. I mean, like, trusting you, and we are not even known to the bank. Okay, still they kind of gives the loan to us. So be very grateful to that bank, and slowly you'll see that, you will realize that kind of a money. And dream list में तो वो है ही ना आपके. सो ये सब चीजें जो होती हैं, जो बड़ी बड़ी चीजें जो आपको बॉदर कर रही है ना, ऑलवेज पुट देम इन योर ड्रीम लिस्ट. दैट इज व्हाट रॉन्डा बर्न हैड टॉट. नाउ वी आर गोइंग टू डू दैट अगेन इन चैप्टर नंबर 13. अगर आपने नहीं किए तो आप उसमें लिखो. मैंने भी अपनी 10 ड्रीम्स में ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसे लिखी हुई हैं, एंड आई एम रीडिंग देम एवरी डे विदाउट फेल. Irrespective of how super busy I am, I'm traveling, I'm flying, whatever, so I'm sitting at the boarding gate and doing it. At times I'm reading it, when I get even 2 minutes of a break. It doesn't take too much of time.
and then slowly you'll see. So it is thank you, universe, for giving him the money to pay off, the remaining money to the bank. That way, this is what you can write, and you will have it generated very soon. And you don't know how. I've seen some amazing experiences when it comes to paying back the loans, even when they were 60 lakhs to a crore or something. So it's been, it'll just come around. Don't put your brain into it. Just be in a very good positive zone about it, about the thing that you're using with that loan money, and about for the bank, which has trusted you enough to have given you so much of money that way. Yes, thank you so much, Hanji. ma'am. Now, one more question, then I'll give it to Soumya. Huh? So, yes, someone has asked that there is someone who is hesitant of taking prasad from anyone else. Like, अगर मैं प्रसाद दे रही होंगी तो she is very hesitant to take that, but वो temple जाके ले लेती हैं. So she said that what to do. Like there's no other thing. Like very hesitant. She is well educated. कोई problem नहीं है ऐसा. Financially okay है. Educated है. But कोई और प्रसाद देता है उनको तो वो hesitant हो जाते हैं कि पता नहीं कुछ मिला दिया होगा या negative feeling से दिया होगा. So what to do about that? चार्जेड। सो हो सकता है आपकी कुक ने भी जो खाना बनाया है वो भी हमारी बुराई करते करते बनाया, इतना सारा काम बता दिया, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसे ही तो खाना कभी कभी बनता है ना, हमारे किचन में भी जब कोई और बना रहा होता है। सो उसको चार्ज कर लो, वो खाना आपके पास आया, उसमें इतना सारा अच्छा वाइब डालो दैट थैंक यू फूड फॉर गोइंग इनसाइड एंड नरिशिंग मी, थैंक यू टू ऑल द फार्मर्स हु ग्रोन द क्रॉप्स, एंड टू ऑल द the sellers, the transporters, and the cook who has made the food. And thank you to everyone, for bringing this food on my table. Thank you so much. Now the energy in that at quantum level has changed. Now you consume it. So प्रसाद तो आपको रोज ही बना के खाना होता है। हो सकता है कि जो सब्जी वाला भी हो सकता है बहुत बारिश हो उस दिन, और वो लाइक बहुत मिजरेबल कंडीशन में हो कि मेरी पूरे पत्ते वाली सब्जियां खराब हो रही हैं, इतनी बारिश हुई है, मैं कैसे बैठूं, और वो पूरा भीगा भीगा बहुत परेशानी में बैठा हुआ है। तो उस सब्जी ने एब्जॉर्ब किया है ना, उस पर्सन की जो सेलर है उसकी लाइफ कंडीशन जो थी वो सब्जी में सारी एब्जॉर्ब हुई है ना। जो पानी होता है सब्जी में वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है जो किसी की भी एनर्जी को। तो लेकिन जब वो आपके घर में आ रही है तो एनर्जी चेंज कर, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। सो प्लीज चेंज दैट एनर्जी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. So I also don't, I consume everything from everyone, water, food, whatever. There are people in my office bringing buttermilk from home. There are people getting dry fruits from home. There are people getting, I mean, we all pool in and together we have our lunch in the office. So everybody is carrying a lot of things. कोई दाल ला रहा है, कोई राजमा ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है. तो but then eventually जब वो मेरी प्लेट में आता है, so I'm taking everything from every bowl and I'm putting it in my plate. But my plate, I will do an observer effect. Observer effect is you have to look at everything which is there in your plate, okay, and say thank you so much that this is going inside and keeping me alive and nourishing me, and giving me the best, a strong health, good immunity. All that you do is, the food is charged. It really doesn't matter that what energy did it come to you, in, but now you have transformed it. That's what matters. So that's how it is. So don't worry. सबका सब कुछ खा लो, कोई दिक्कत नहीं है. आप किस एनर्जी में खा रहे हो वो मैटर करता है. हाँ जी. Yeah. Thank you, ma'am. Soumya, it's your turn now. Thank you. Thank you, Dee. Ma'am, next question from my end is, there's a couple. The lady is 45 years old. They have been married for 15 years now. And the wife wants to conceive, but the husband is not keen. So wife is like, what she should do to change this energy, or how she should go out is the question. Ho'oponopono. If the husband is not ready, then she needs to do Ho'oponopono. There is some negative energy about it. So I really don't know what is the situation and why the husband is saying no to having a baby. Okay, so maybe there is something, some backlog from the past which is bothering him a lot. या मतलब पता नहीं क्या है, हो सकता है कि
ऐसे तो नहीं कि बहुत मिसकैरेजेस हुए हों इसलिए हो, but no matter whatever be the condition, just don't worry, do ho'oponopono, clear that energy around in the house, which is like, and when you pray, it is like, I'm sorry, please forgive me that whatever is the reason why there is the baby is not there in my lap, and thank you, and like, you have to kind of really, I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you for giving me a nice healthy प्यारा सा baby and with a great soul, या कोई ना कोई जो सोल होगा जो आपके आपके घर में आने के लिए वेट कर रहा होगा, वो आ जाएगा. सो आप होपोनोपोनो करो, ये थोड़ा सा, और ये 15 मिनट्स करना पड़ेगा आपको, और अपने हस्बैंड की रिलेशनशिप के लिए, बिकॉज जो चीज़ आपके एनवायरनमेंट में है, जो आपकी लाइफ में हो रही है, it is because somewhere somehow you're the reason for it. So we are the cause for everything that's happening in our life. It can come through people, but we are the cause, we are the reason. So we need to change that energy by practicing ho'oponopono. Please do it for 15 minutes. And thank you, I love you, that for the beautiful baby, beautiful soul to come into your life. ओके, चाहे वो आप पैदा खुद कर रहे हो, या एडॉप्शन के थ्रू आ रहा है, या आईवीएफ के थ्रू आ रहा है, दैट रियली डजंट मैटर. जो सोल आपके घर में आपका बेबी बनने के लिए बना है, वो ऑलरेडी लाइक वो आएगा ही आपके घर में. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. Enjoy the process also. Don't get stressed about it. Yeah. Okay, ma'am, thank you so much for that. Next question. I have recently changed my job. I was on a very good terms with my previous organization until I asked for my dues, which included my salary, security, gratuity, and experience level. I'm doing 555, 369, 21, and blessings to the school every day. What other affirmations or practices should I take up? There's so much of a resistance in your life. जो भी आप हैं, मुझे तो पता नहीं है, but इतना ज़्यादा resistance है आपकी लाइफ में कि आप इतनी सारी practices कर रहे हो, 369, 555, 21 days, affirmations, all that for one particular thing. That means there is a lot of resistance. ऐसे पूरी होंगी ही नहीं वो. ठीक है, थोड़ा सा easy हो जाओ. उस स्कूल के बारे में बस आप 10 blessings लिखो रोज. ठीक है, that's all you need to do right now. और 555 प्रैक्टिस 5 दिन की होगी, जिसमें आप लिखो दैट थैंक यू दैट आई हैव रिकवर्ड ऑल माय मनी दैट वाज माइन फ्रॉम सो एंड सो स्कूल. दैट्स अबाउट इट. ओके, तो ये आप 5 दिन लिखो, दैट इज 55 टाइम्स, और फिर भूल जाओ. आपने देखा ना, मैंने तो कैसे मेरा तो चोरी किया हुआ पैसा कैसे निकला है. सो दिस इज व्हाट आई डिड. आई डिड नॉट हैव अ सिंगल नेगेटिव फीलिंग. मेरी एनर्जी बहुत अच्छी थी. जिस इंसान ने मेरा चुराया पैसा, 2 लाख रुपीज उसने लिया मुझसे. मुझसे नहीं लिया, मतलब अकाउंट में से लिया, जो भी था साइबर क्राइम. सो जिस भी पर्सन के लिए गया, जैसे ही मुझे पता लगा दैट, एंड इट्स अ वेरी हार्ड अर्न मनी, यू ऑल नो आई वर्क सो हार्ड. इतना ट्रैवल होता है मेरा, और फिर बहुत ज्यादा दिमाग वाला काम, एंड सो इट जस्ट वेंट इन अ फ्लिक ऑफ अ सेकेंड. एंड जिसने भी लिया है, मुझे उसका नाम भी पता लग गया था. नाम पता लगा था, कॉप्स के थ्रू ही पता लगा था. तो नाम पता लग गया था, बिकॉज जिसके अकाउंट में वो पैसे गए थे, वो वो किस अकाउंट होल्डर का नाम मुझे पता लग गया था. कॉप्स ने बता दिया था तब. तो मैंने खूब सारी ब्लेसिंग्स करी विद अ स्माइल ऑन माय फेस. ठीक है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स करी उसको, कि मेरा पैसा जो उसने लिया है वो किसी की एजुकेशन के लिए यूज हो, और वो बहुत अच्छे, और उस पर्सन को खूब विजडम आए, खूब मैजिक डस्ट, मैजिक वॉन्ड, सब कुछ किया उस पर्सन के लिए जो चोर था, उसके लिए. ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने, जब मुझे ये लग गया कि अब मैं उस जोन में आ गई हूँ जहां पे मेरे मन में रेजिस्टेंस नहीं है ज्यादा, देन आई डिड द 555 प्रैक्टिस, एंड देन आई रेड फॉर यू गाइज. नो व्हाट डिड आई राइट फ्रॉम माय डायरी. मेरी 555 की डायरी ही अलग है. मैंने उसमें लिखा था थैंक यू यूनिवर्स. सो आई डू माई 555 इन स्लाइटली अ डिफरेंट वे. सो व्हाट आई डू इज, first in a small paragraph I write a declaration that dear universe, or thank you that I have received that money, whatever amount, with ease and joy or whatever. और फिर उसके बाद मैंने वन लाइनर लिखा.
that thank you that I have easily recovered my 2 lakh rupees. बस एक लाइन ये मैंने 55 times लिखी, and I started on 31st of December. I ended it on 4th of January because that was 5 days. And uske baad, then I on 14th or 14th, let me just see the date on which. So 1st to 14th, because हमेशा ये हो जाता है ना मेरी wish उसके ऊपर I write that done on this on 14th of January. This is my 555 diary. And if you can see that up here I have, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ it is done. ओके और इधर मैंने लिखा डन ऑन 14th of January. ओके सो ऐसे मैंने बहुत सारी 555 प्रैक्टिसेस करी है और जिनके ऊपर मैं ऐसे लिख देती हूँ इट इज डन होने के बाद, मतलब वो हो गई है, ठीक है, वो जेन्युइनली हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी ये वाला मेरा 555 का, और मैंने लिख दिया इट इज डन ऑन 14th of January 2024. सो दिस वाज व्हाट वाज रिटन ऑन द टॉप. सो इसका मतलब है 14 जनवरी को मेरे पास 2 लाख रुपए आ गए अपने आप, ठीक है. अब उस पर्सन से नहीं आए, वो अभी भी केस चल रहा है, बट अनएक्सपेक्टेड 2 लाख रुपए मुझे पता नहीं कहाँ से आ गए थे बिकॉज मैंने 555 की थी, ठीक है. वो भी आ जाएंगे मेरे पास क्योंकि मैंने डिक्लेरेशन में ये लिखा था विद रिसीव बाय दिस विद बोनस विद बोनस ये भी लिखा हुआ था. जो ऊपर डिक्लेरेशन की हुई थी उसमें लिखा हुआ था I am so grateful that I have received my 2 lakhs now with bonus by 31st January 2024. ये देखो लिखा हुआ है ऊपर by 31st January and I got it on 14th of January 2024. ओके दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो आपका जितना भी पैसा है, अगर पैसे को अच्छी एनर्जी पसंद होती है, वो कूद के आपकी जिंदगी में आ जाएगा. आपको पता भी नहीं होगा कि वो कहाँ से आ सकता है. मैंने अपना एग्जाम्पल दिया था, फिर मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ का दिया था जब उसको 5 लाख रुपीज चाहिए थे फॉर समथिंग, and some father, some distant cousin living in some small pind in Punjab, वहां पे उनके फादर के नाम का बचपन में कोई सारे कजिन्स का मिलके कोई लैंड था जो बिका और उसका 5 लाख रुपए का शेयर था. और वो मेरी सिस्टर इन लॉ जो प्रीति हैं, उनको फोन करके, गांव से कोई फोन आया, बहुत मुश्किल से वो नंबर ढूंढ के कि प्रीति आपके डैड, और प्रीति के डैड की डेथ हो चुकी है. सो प्रीति को फोन आया दैट आपके डैड के नाम की कोई जमीन थी या कुछ था, उसका कुछ बिका है, तो ये 5 लाख रुपए उनके नाम से हैं, तो आप अपना अकाउंट दे दो तो हम उसमें ट्रांसफर कर देते हैं. शी नेवर न्यू दैट दिस काइंड ऑफ cousin existed in her life, like she didn't even know that उसके डैड का कोई cousin था या कुछ ऐसे था. It just that she wanted that 5 lakh rupees for something that she really wanted to start her candle business or something like that. And she could have easily taken money from Rahul. Rahul is my brother-in-law, Mera Devar. So she could have taken from Rahul, but she was very clear that I'm not asking Rahul to give me the money and I'll kind of, receive it myself. And she just put it in her dream list and it just actualized. So don't worry, आपका पैसा है ना आपके पास. ये दोनों पैसे के एग्जाम्पल मैंने आपको इसीलिए दिए हैं क्योंकि मेरा तो बिल्कुल ही लीस्ट एक्सपेक्टेड था, प्रीति का भी लीस्ट एक्सपेक्टेड था. हमने सोचा भी नहीं था, मुझे तो लग रहा था कोर्ट केस चलेगा. अगर मैं नॉर्मल इस जर्नी में नहीं होती देन आई वुड हैव थॉट दैट ये कोर्ट केस चलेगा, मतलब वो साइबर क्राइम का केस तो चल ही रहा है, सो कॉप्स मुझसे बात करते रहते हैं वो सब, तो मैं तो यही सोचती ना कि वो रिसीव हो जाएगा और वो पैसा भी मेरे पास आएगा. मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मुझे बताया है कि आपका पैसा काफी जमा हो गया है, ये पूरा हो जाएगा तो आपको एक प्रोसेस के थ्रू आपके अकाउंट में सारा क्रेडिट हो जाएगा दिल्ली पुलिस की तरफ से. सो वो भी आ जाएगा. अब मैंने विद बोनस लिखा है ना इसमें, तो 2 लाख कैसे आएगा. प्रिसाइजली वो 1,87,000 चोरी हुआ था, ठीक है. सो उसमें से 2 लाख आ गया है मेरे पास, तो वो ऑलरेडी बोनस आ गया है. और ये वाला जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है साइबर क्राइम का, दिल्ली पुलिस दुनिया की नंबर 1 कॉप्स में आती है अब. सो ये भी रिकवर हो रहा है मेरा. वो कह रहे हैं कि हमने सारे उस पर्सन के अकाउंट सीज कर दिए हैं, जितना भी अमाउंट उसके किसी भी अकाउंट में आता जा रहा है वो हम आपके लिए होल्ड करते जा रहे हैं, जैसे अमाउंट पूरा हो जाएगा आपको मिल जाएगा. तो विद बोनस में बस वो भी आ जाएगा. सो पैसे की तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, बस आप ग्रैटिट्यूड करो उस स्कूल, उस जॉब के लिए. एक एक चीज बारीकी से निकालो जो उसने उस पर्टिकुलर स्कूल या जो भी आपकी जॉब थी उसमें आपको जो मिली है. द ग्रोथ, द एक्युलेट्स, द फैमिली, द बर्थडे फंक्शंस दैट दे मे हैव हैड व्हेन योर ऑन योर बर्थडे, या जो आपने वहाँ फ्रेंड्स बनाए. बस आप बहुत अच्छी एनर्जी दो स्कूल को
अपने आप पैसे आ जाएंगे। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस अपनी जैसी फ्रीक्वेंसी हाई करो। मनी की फ्रीक्वेंसी यहाँ होती है, आपकी अगर यहाँ है तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। ठीक है, आप अपनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे करो एंड देन इट मैचेस एंड देन मनी विल कम टू यू। दैट्स हाउ इट वर्क्स। हाँ जी, आई थिंक टाइम भी हो रहा है ना? एक Yeah, क्वेश्चन ma'am. लास्ट It's ले लेते हैं, 6:30 देन विल on. कॉल इट अ डे। Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay. The question personally, I wanna read. Know my husband forgets his limits and becomes very, including female students. This, this behavior has led to a lot of arguments between them. So the woman, the lady in question is asking how to. Someone else will have to ask this question with a better connectivity. मैं बहुत, I think it's my network. No, Dishant, अगर ma'am, आपने it's सुना है तो आप hers. बताओ, because I could hear last time when you were talking to me. No, no, ma'am. It is Can Soumya. सुनाई I नहीं दिया. can I repeat again? Is my voice Yeah, audible? okay. Uh-huh. Uh, uh, the wife is saying that her husband is a good person, but sometimes he forgets his limits and becomes very frank while talking to students. This casual attitude has led to a lot of arguments and fight between them. So how does the wife overcome this challenge? Oh, then you just have to kind of do an affirmation, of course. Like you can do this affirmation that me and my husband have a very, very healthy relationship, and he always knows where to draw the line when he communicates with anyone, and he is physically, mentally, and emotionally happy and healthy. Okay, so this is what you need to, and a very responsible and a sincere person. So you need to keep writing this. Write this 10 times, 20, 21, whatever. You will see that his behavior will start, changing for the better that way. Thank you, Okay, ma'am. ma'am. Shall we conclude or can we take No, I another think we'll question? have to, yeah, we'll have to end now. Okay, because it's Okay, time ma'am. already, so we will not be able to do it. And thank you so much, Priya and Soumya, for going out of your way and, like kind of collecting questions and keeping everyone's anonymity, not just from me, but from each other and everyone else. So thank you so much for taking this extra burden on you. I know that it was a Oh, working day. Of course, Soumya was in office, and Priya, you must have been so busy with your husband and children at home today. So, but Thank thank you you so much. so much for doing this. And Thank you, Thank you, Deepti, ma'am. Priya, Thank you for all Thank your you Soumya. so time. much And for the so much, Yes. there are a few questions left that will be answered later on, right, ma'am? yeah. So we'll do it again. We keep doing Yeah, the ma'am. Q&As now very Yes. often. So we'll do another 1 hour sometime very soon, maybe next Saturday. And then we'll have them answered. So next Saturday is my working Saturday, but we'll do it, we'll just figure out what to do about it. Okay? Okay, ma'am. Very Thank you interesting so Q&A much for your session. time, ma'am. Thank you. Thank Thank you so much you. for your time. So Thank you so amazing. much. Bye-bye. So this is getting recorded Thank and you it so will much, get ma'am. posted on the YouTube in a while. Yes, Okay? In a yes, while, yes. as in maybe today or tomorrow, whenever we'll post it on the YouTube replays. Thank you, Deepti you, ji. ma'am. Thank you so Thank much. you, ma'am. Dipti. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so Bye. much. Have a great evening. Bye.